नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कम्यूटेड पेंशन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर श्री चंद्र मोहन टंडन जी पिटीशन फाइल की गई थी, उस पर इंटरिम ऑर्डर किया गया था। उस इंटरिम ऑर्डर को अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। दोस्तों, कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और इस इंटरिम ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा श्री चंद्रमोहन टंडन जी को लेटर लिखा गया है, वो लेटर नंबर है HR ENO1174-2024 टू श्री चंद्रमोहन टंडन, PF नंबर 121735, हाउस नंबर 1726, सेक्टर 13, अर्बन एस्टेट, करनाल, HR12132001. Subject: Implementation of the order dated 31/5/2024 passed by the Honorable High Court of Punjab and Haryana in the writ petition number CWP 1458-2024 Chandramohan Tandon and others versus Union of India and others regarding recovery restoration of commutation pension. With reference to the subject matter, we wish to inform that caption writ petition CWP number 14058 of 2024 has been filed before the Honorable High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh for questioning of the amendment made in Rule 11.1 Volume 2 of Punjab Civil Services Rules as applicable to Haryana wide Punjab Civil Services Rule Volume 2 Haryana First Amendment Rule 2023 notification dated 4th March 2003 made applicable with effect from 1/1/1996 being contrary to the interest of retired employees as the committed amount of pension is being recovered in just 11 years and 2 months, and further without any specific prior also seeks to challenge in writ petition regulation 41(4) and 41(5) of the Union Bank of India employees. On 31 May 2024, the Council for Union of India sought time to file a detailed reply to the writ petition filed by the petitioner, but in the meantime, the Honorable High Court has passed an order and ad interim order by staying the recovery of committed amount of pension for petitioners who have completed 10 years and more in Union Bank of India. Third point है इसमें कि the relevant portion of order dated 31/5/2024 of the Honorable High Court in the caption writ petition is reproduced below. ये वही ऑर्डर है जिस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया था। मिस उर्वशी दुग्गा, सीनियर पैनल काउंसिल, accepts notice on behalf of respondent number 1 and seeks time to file reply, may do so on or before the next date of hearing with a copy in advance to the council opposite list on 21st August 2024. In the meantime, further recovery shall remain stopped while we have passed the said interim order in several cases restricting the respondents from making any recovery. It is clarified that the same would be erections in cases where all the concerned petitioners has completed 10 years of retirement or above. इस तरह से इस ऑर्डर में 10 साल से ऊपर जिन लोगों को रिटायर हुए हो गया उनके रिकवरी पर रोक लगाई गई है, लेकिन ये केवल इंटरिम ऑर्डर है। इसका फाइनल ऑर्डर तभी आएगा जब रिस्पोंडेंट
को सुना जाएगा और उनका रिप्लाई को एग्जामिन कर दिया जाएगा विज रिट पिटिशन। इस लेटर के 4th पॉइंट में द रेगुलेशन 41 सब रेगुलेशन 5 of Union Bank of India Employees Pension Regulations 1995 stipulates that an employee who had commuted the admissible portion of a pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after expiry of a period of 15 years from the date of commutation। ये तो रूल ऑलरेडी है सभी जगह सभी बैंकों में और उसी को उन्होंने रिपीट किया। इसमें 5th पैरे में लिखा इट इज़ इन्फॉर्म दैट यू आर वन ऑफ द petitioner having completed 10 years or more years of availing commutation in CWP 14058-2024 who had voluntarily opted for commutation of pension as per the Union Bank of India Employees Pension Regulation 1995। ये तो फैक्ट है कि वो एक पिटिशनर हैं जिन्होंने 10 साल से ऊपर रिटायर हो गए उनको और उनका कम्यूटेशन का अमाउंट अवेल किए हुए भी 10 साल से ऊपर हो गए। इसको रिपीट किया उन्होंने फैक्ट को। 6th पैरा में लिखा है इट इज़ इन्फॉर्म दैट योर कम्यूटेड पेंशन हैज़ बीन रिस्टोर्ड from June 2024 and onward in compliance of the aforesaid court order। तो इस कोर्ट ऑर्डर का अब कंप्लायंस कर दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट पैरा में लिखा है इट इज़ इन्फॉर्म दैट द अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिलीज टू यू ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट विल बी सब्जेक्ट टू पे बैक or recovery from monthly pension payable to you as per the outcome of the writ petition। क्योंकि ये तो स्टे हुआ है इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे, इसका फाइनल ऑर्डर अभी आना बाकी है जब तक रिस्पोंडेंट को नहीं सुना जाता, जिसमें कि यूनियन ऑफ इंडिया है और बैंक मैनेजमेंट और ट्रस्टीज़ भी हैं। तो जो फाइनल ऑर्डर आएगा उसी के आउटकम पर निर्भर करेगा। आशा करते हैं कि फाइनल ऑर्डर भी इसी लाइन में होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधित, बैंक पेंशन संबंधित, बैंक के स्कीम्स के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।